Good morning, guys. This is Dr. Anil from Dr. Anil Works. I hope you all are doing well. How's your study? Study is also going well, I think. Okay, the good news is that, guys, in medical physiology audiobook series, we have completed Unit 3. Now we'll be starting with the Unit 4, the circulation. Okay, but before that time, before starting, I would like to tell you that there is one. I want to start one thing that I will be asking one MCQ regarding any subject like anatomy, physio, or anything, so that we will be able to uh, complete our MCQs also, and for the answer of that MCQ will be given in end of the video. Okay, with the explanation. So I hope so during the course of this video you should find out the answer in your mind. So be prepared for the answer, and just pause your video last before answer, and take out the notes, and answer it, and see if it your answer is right or wrong. Okay, and I'll be giving you explanation of that answer also in the end. Okay, so without wasting any time, let's start with our project. Okay, so guys, I think a lot of students having uh, questions like how this will help us in our study. So just listen, guys. As we listen to radios, as we listen to any songs, or as we listen to anything again and again, so we will keep this information in our mind for longer duration, right? Without Okay, so I think we will be able to complete our syllabus without efforts. So this is how is going to help us, and make sure that before our exam, so if we listen each audio 100 times, so believe me, guys, one line we are listening or hearing for 100 times, that means each chapter is being revised for 100 times, and with that concept also. So we just have to listen to that audio in number of times, but just focus on the voice, and try to comprehend from that voice. Okay, guys. So guys, here is the first question of today's. Ashleigh gyrus in the brain is located in A. Primary auditory complex, B. Medial frontal lobe, C. Visual cortex, D. Parietal association areas. So keep in mind that this question has been asked in JIPMER examination from anatomy section, November 2016. Okay, so this is the ideal question for our preparation. Let's start. So you will just find out the answer, and or just think about the answer, and tell me the answer in the comment section. Okay, you will get explanation of this answer in the last. Okay, at the end of this video. So but be अपने खुद से थोड़ा सा ईमानदारी रहा. ओके, सो थिंक, तब तक सोचना, फिर बाद में लास्ट में आपको आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक सोचना, थोड़ा सा आपका फ़ायदा हो जाएगा उससे. ठीक है गाइस, सो गुड डे, बेस्ट लक. Without wasting time, let's start with our unit 4, the circulation. In that we will be studying about medical physics of pressure, flow, and resistance, blood flow and the resistance. Okay, and this will be the chapter 14, and chapter 15 we will be studying vascular distensibility and the function of arterial and the venous system.
chapter 16 we will be studying micro circulation, lymphatic system, and chapter 17 we will study local and the humoral control of the blood flow by tissue. This is how we will be completing about so we will also look for chapter 20 cardiac output, venous return and their regulation. So all these chapters, chapter 14 to chapter 24, will be looking into. Okay, so these are the quite in that we have one chapter, that chapter 22, which explains us about cardiac failure. So I hope you all are enjoying our study. Okay, let's start. Overview of circulation. Firstly, we will see the overview of circulation, medical physics. Medical physics of pressures, flow, and the resistance. So the function of circulation is to service the needs of the body tissue. So what they do in that, it transports the nutrients to the body tissue to supports the waste product away. Okay, sorry, to transport the waste product, it transports the waste product away and transport the nutrients to the body tissue. Okay, and to conduct the hormones from one part of body to another, and in general to maintain an appropriate environment in all the tissue of the fluids of the body for optimal survival and functions of the cells. The rate of blood flow through most tissue is controlled in response to tissue need for nutrients. The heart and circulation in turn are controlled to provide the necessary cardiac output and arterial pressure to cause the needed tissue blood flow. What are the mechanisms for controlling blood volume and blood flow, and how does this relate to all other functions of circulation? So these are some of the topics and the questions that we will discuss in this section in this circulation. Okay, so now physical characteristic of circulation. So we will be looking into figure 14.1 is divided into the systemic circulation and pulmonary circulation. Okay, we all know that we have two types of circulation, systemic circulation and pulmonary circulation. Because the systemic circulation supplies the blood flow to all the tissue of the body except lung, it is called a greater circulation and peripheral circulation. Understood? Systemic circulation will not circulate to the blood, will not supply blood to the lungs. Okay, this is one of the MCQ why systemic circulation is called greater circulation or peripheral circulation, because it supplies blood to tissue of the body except lungs. Okay, now we will be looking for that functional part of the circulation. Before discussing the details of circulatory function, it is important to understand the role of each part of the circulation. Okay, so the function of arteries is to transfer the blood under high pressure to tissue. What is the function of artery? Function of artery is to transport the blood under high pressure. So for this reason arteries, इसी के वजह से, for this reason arteries have strong vascular walls and blood flows at a high velocity in the arteries. Okay, so इसको बताना चाहूँ तो इसके लिए हमको सारा एक इंडिविजुअल पार्ट जो है इस सिस्टम के उनके बारे में जानना पड़ेगा. सो आर्टरीज का काम ये है कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना अंडर हाई प्रेशर. ओके, कहाँ तक लेके जाना है ब्लड को? टिश्यूज तक. ओके, सो इस वजह से आर्टरीज के अंदर स्ट्रॉन्ग वेस्कुलर वॉल है और ब्लड जो फ्लो होता है वो हाई वेलोसिटी से होता है आर्टरीज में. ठीक है, देन arterioles. So arterioles are the last small branch of the arterial system. They act as a control conduits
through which the blood is released into capillaries. So what is the arteriole? Arteriole ये है जो रिलीज करता है ब्लड कैपिलरीज में और कहाँ से लेके जाता है? आर्टेरियल सिस्टम से. ओके, सो आर्टेरियोल हैज अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल. ओके, आर्टेरियल्स में कौन कौन सा वॉल स्ट्रॉन्ग होता है? मस्कुलर वॉल. ओके, दैट कैन क्लोज द आर्टेरियोल completely and can be relaxed and dilate several fold, thus having the capability of vastly altering the blood flow in each tissue bed in response to the need of the tissue. Now see, arterioles में क्या है? Arterioles have a strong muscular wall. Okay, so you know that muscles have the property called a contraction relaxation. Okay, so it can contract the arteriole completely. Okay, और वो रिलैक्स भी कर सकता है या फिर डायलेट भी कर सकता है सेवरल फोल्ड्स. सो दैट अगर वो रिलैक्स हो गया, डायलेट हो गया, इसका मतलब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया या फिर कंप्लीटली क्लोज हो गया तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द कैपेबिलिटी, इट हैज़ कैपेबिलिटी टू अल्टर ब्लड फ्लो इन ईच टिश्यू. जब से मतलब एक फाइट और फ्लाइट कंडीशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को वो ब्लड देगा. सो बाकी के जगह पे क्या होगा? कंस्ट्रिक्शन. Understood? So the function of capillaries is to exchange the fluid, nutrients, and electrolytes, hormones, and other substances between the blood and the interstitial fluid. To serve this role, the capillary walls are very thin and have numerous minute capillary pores permeable to water and other small molecular substances. I think you will understand this if you listen this line one more time. What is venule? Venule collects the blood from capillary. Venule क्या करता है? कैपिलरी से ब्लड कलेक्ट करेगा and they gradually coalesces into the progressively larger vein. और वो क्या करेगा? ग्रेजुअली सब एक साथ मिलेंगे और वो लार्ज वेन बनाएंगे. ओके, देन वेन्स का क्या फंक्शन है? द वेन्स फंक्शंस आर कंडक्ट्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम द वेन्यूल बैक टू द हार्ट. वो फिर से वो वेन्यूल से ब्लड लेगा और फिर से हार्ट को बैक कर देगा. इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट. दे सर्व एज अ मेजर रिजर्वायर ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड. सो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा रिजर्वायर क्या है ब्लड का? वेन्स. ओके, बिकॉज द प्रेशर इन द वेनस सिस्टम इज लो. ठीक है, वेनस सिस्टम में प्रेशर क्या होता है? लो होता है. सो द वेनस वॉल्स क्या होती है? थीन होती है. ठीक है, और इवन so they are muscular enough to contract or expand and thereby act as a controllable reservoir for extra blood, either a small or large amount depending on the needs of the circulation. So उनके अंदर भी muscular wall होते हैं. So they उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और एक्सपांड करे. ठीक है ना. वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेशन. Figure 14.1 gives an overview of circulation and lists the percentage of total blood volume. Okay, volume of blood in different parts of circulation. Figure 14.1 gives an overview of the circulation and lists the percentage of total blood volume in major segments of the circulation. For instance, about 84% of the entire blood volume is in the systemic circulation. MCQ. Okay, and 16% is in the heart and lung. So 84% is in the systemic circulation and remaining 16% is in heart and lung. Okay, so out of that 84% in the systemic circulation, 64% कहाँ पर होगा? वेन्स में होगा. ओके, एंड 13% कहाँ होगा? आर्टरीज में. और 7% कहाँ होगा? सिस्टमिक आर्टेरियोल और कैपिलरीज में. अगेन पूरा 100% में से 84% सिस्टमिक सर्कुलेशन में होगा और 16% होगा
हार्ट और लंग्स में, ओके। और 84% में से 64% होगा वेन्स में, और 13% होगा आर्टरीज में, 7% होगा सिस्टेमिक आर्ट्रियोल्स और कैपिलरीज में, ओके। और हार्ट कंटेन्स 7% ऑफ द ब्लड एंड पल्मोनरी वेसल्स कंटेन्स 9%, ओके। पल्मोनरी वेसल्स में कितना परसेंट होता है? 9%। और हार्ट में कितना परसेंट होता है? 7% ऑफ द ब्लड होता है, ठीक है। सो मोर सरप्राइजिंगली is the low blood volume in the capillaries. It is here, however, that the most important functions of the circulation occurs: diffusion of substances back and forth between the blood and tissue. This function is discussed in chapter 16. Okay, in chapter 16 we will see क्रॉस सेक्शनल एरियाज एंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लड फ्लो देखेंगे अभी। व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरियाज और वेलोसिटीज ब्लड फ्लो का कैसे है, किसके ऊपर डिपेंड होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ ऑल द सिस्टेमिक वेसल्स ऑफ ईच टाइप वर पुट साइड बाय साइड, ठीक है, हर एक का सिस्टेमिक जो वेसल्स है उनको हर एक टाइप के उनको साइड बाय साइड रख दिया, ओके। so then their approximate total cross sectional areas for the average human being would be as follows. so अब क्या होगा वो, यहाँ पर चार्ट के अंदर दिखा है। यहाँ पर देख लीजिए ना, आयोटा का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल आर्टरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आर्टेरियोल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। Make sure the capillary has the largest cross sectional area in our body, okay. Venules का cross sectional area है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्मॉल वेन्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेना केवा का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 8। Note particularly the much larger cross sectional areas of veins than the arteries, averaging about 4 times those of the corresponding arteries. This explains the large storage of the blood in the veins system in comparison with the arterial system. So corresponding veins जो होती है वो 4 times ज़्यादा कैरी करती है आर्टरीज से, अंडरस्टूड। so इसके because the cross sectional areas of the veins is much larger than corresponding arteries, okay, because the same volume of the blood must flow through the each segments of the circulation each minute, right. so the velocity of the blood is inversely proportional to the vascular cross sectional area, okay. so thus the under resting condition the velocity averages about 33 centimeter per second इन आयोटा के में रेस्टिंग कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बट इट इज ओनली 1000th as rapidly in the capillaries, okay, about 0.3 millimeter per second. However, because the capillaries have a typical length of only 0.3 to 1 millimeter and the blood remains capillaries for only 1 to 3 seconds, ब्लड कैपिलरीज में सिर्फ 1 से 3 सेकंड के लिए रहेगा, ठीक है गाइस। सो दिस इज द शॉर्ट टाइम इज सरप्राइजिंग because all the diffusions of the nutrient, food substance, electrolytes and everything that occurs through the capillary walls must do in this exceedingly short period of time. Now we will see the pressure in the various portion of the circulation. Because the heart pumps up blood continually into the aorta, the mean pressure in the aorta is high, okay. Average कितना होता है 100 mmHg. Also because the heart pumping is pulsatile. पल्सेटाइल क्यों है? बिकॉज एक बार सिस्टोलिक से जाएगा, एक बार डायस्टोलिक से जाएगा, सिस्टोलिक से जाएगा 120 mmHg से, डायस्टोलिक से जाएगा 80 mmHg. दैट्स व्हाई दिस इज पल्सेटाइल. सो एज द ब्लड फ्लोज थ्रू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट्स मीन pressure falls progressively to about 0 mmHg by the time it reaches the termination of a vena cava where they empty into the right atrium of the heart.
इसका मतलब जब पम्प सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होता है तब जो प्रेशर होता है लाइक सिस्टोलिक या डायस्टोलिक 120 mmHg और 80 mmHg, बट जो वो रिटर्न आ जाता है ब्लड राइट एट्रियम में, मतलब वेना के बाद जब उसको रिटर्न कर देता है तब उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है 0 mmHg. Okay, so at the end of systemic circulation what is the blood pressure? 0 mmHg. Understood? Okay, so now the pressure in the systemic no, not a blood pressure, now the blood flow is the 0 mmHg. Okay, at the end, so the pressure in the systemic capillaries varies from as high as 35 mmHg near the arterial ends as low as the 10 mmHg near the venous ends, but the average functional pressure in the most beds is about 17 mmHg. तो इसमें इसका मतलब है जब कैपिलरीज हम देखेंगे, आर्टेरियल्स देखेंगे, तब वेन कैपिलरीज जब देखेंगे तो आर्टेरियल एंड का जो कैपिलरीज होगा वहाँ पर प्रेशर होगा 35 mmHg, और वीनस एंड के इधर कैपिलरीज जो होगी वहाँ पर प्रेशर होगा 10 mmHg, लेकिन मीन अगर निकालेंगे पूरा कैपिलरीज का तो 17 mmHg होगा. ओके, it is the very low pressure that is enough to not allow the plasma to leak, okay, from that minute spore, but these minute spores are the enough to diffuse the nutrients easily, okay, from that same pores to outline tissue. So note at the far right side of the figure 14.2 the respective pressure in the different parts of the pulmonary circulation. In pulmonary arteries the pressure is pulsatile just as in the aorta, but the pressure level is far less. Okay, pulmonary artery systolic pressure averages about 25 mmHg and diastolic pressure 88 mmHg, with the mean pulmonary arterial pressure of about 16 mmHg. So pulmonary artery का प्रेशर के बारे में था 25 mmHg सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक प्रेशर 8 mmHg है, और मीन आर्टेरियल प्रेशर इसका है 16 mmHg. So the mean pulmonary कैपिलरी का प्रेशर कितना होता है? मीन pulmonary capillary pressure is 7 mmHg. Okay guys, yet the total blood flow through the lungs each minute is the same as the systemic circulation. So the low pressure of the pulmonary system are in accord with the needs of the lungs, because all that is required is to expose the blood to the oxygen. Okay guys, and the other gases of the in the alveoli, that is only requirement. So basic theory of the circulation क्या है देखते हैं. Basic theory, there are three basic principles that underlies the theory. Okay, so first is the rate of blood flow to each tissue of the body is almost always precisely controlled in the relation to the tissue need. Okay, when मतलब कितना बॉडी का नीड है उस हिसाब से ये प्रिसाइजली कंट्रोल किया जाता है. ओके, when the tissue are active उनको ज़्यादा ब्लड लगेगा, means they need great supply of nutrients, so that's why the much blood flow should be there. So when at rest, तो occasionally as much as the 20 to 30 times resting level से ज़्यादा उनको active time में चाहिए blood flow. Understood? So at rest is normal, and when they get active, so they will need 20 to 30 times at times the resting level. Yet the heart normally cannot increase its cardiac output more than 4 to 7 times greater than the resting level. हार्ट की कैपेसिटी सिर्फ 4 to 7 times ही है ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, इसलिए that's why it is not possible simply to increase the blood flow to the everywhere in the body where a particular tissue demands increased flow. Okay, instead micro vessels are there in each tissue which continuously monitor the tissue needs, which tissue needs more. Okay, so such as the availability of oxygen and the other nutrients and the accumulation of a carbon dioxide and other tissue waste products, and these in turn acts directly on the local blood vessel, dilating or constricting them to control the local blood flow precisely to that level of required for the tissue activity, and also the nervous control of the circulation from central nervous system provides the additional help in the controlling tissue blood flow. Now second में the cardiac output is controlled mainly by the sum of the all local tissue flow. cardiac output local tissue का जो flow है उनसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, सम करके.
सो उसमें क्या होता है, थ्रू द टिश्यू इट इमीडिएटली रिटर्न्स बैक वे द वे ऑफ द हार्ट, मीन्स जितना भी हार्ट में आ जाता है वो इमीडिएटली बैक दे जाता है आर्टरी को. Okay, so the heart respond automatically to this increase inflow of the blood by pumping it immediately to the arteries from the where it has originally come. So thus the heart act as an automation responding to the demands of tissue. So the heart, however, often needs help in the form of special nerve signals to make pump the required amount of ब्लड फ्लो. मीन सिग्नल्स क्या करेगा, सिग्नल्स उसको बताएगा कि इसको ज़्यादा चाहिए, इस टाइम ज़्यादा चाहिए, इस टाइम कम चाहिए, तो स्लो बीट करो और फास्ट बीट करो, उस तरीके से. दैट्स वाई दे नीड अ सिग्नल. इन जनरल थर्ड बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इन जनरल द आर्टेरियल pressure is controlled independently of either local blood flow control or cardiac output control. Okay, the circulatory system is provided with an extensive system for controlling the arterial blood pressure. For instance, if at any time the pressure falls significantly below the normal level of the about 100 mmHg, within second a barrage of the nervous reflexes elicits a series of circulatory changes to raise the pressure back to the normal. ठीक है, अगर ब्लड फ्लो फॉल हो गया तो बहुत सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस एलिसिट्स हो जाते हैं जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लाएंगे. ठीक है, सो नर्वस सिग्नल्स पहला क्या है, द नर्वस सिग्नल्स द स्पेशली द इंक्रीज फोर्स ऑफ हार्ट पंपिंग इंक्रीज करने के लिए नर्वस सिग्नल आएगा. सेकेंड, द कॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज विनस रिजर्वायर्स टू प्रोवाइड मोर ब्लड टू द हार्ट, मीन्स वेनस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा ब्लड आने के लिए. और सेकेंड, third is the cause the generalized constriction of most of the arterial throughout the body so that the more blood accumulates in the large arteries to increase the arterial pressure. Okay, so then more prolonged periods, hours and the days, the kidney play an, अगर ये ज़्यादा prolong हो गया तो kidney will play an additional major role in the pressure control by secreting pressure controlling hormone or by regulating blood volume. Thus, in summary, the need of the individual tissue are served especially by the circulation. Okay, especially by circulation. In the remainder of the chapter, we will discuss it more detail. Okay, how the blood flow is managed, what is the cardiac output and arterial pressure, etc. Now we will see the interrelationships among the pressure, flow, and the resistance. Okay, so blood flow through the blood vessel is determined by two factors. Okay, first is the pressure difference of the blood between the two ends of the vessel, also sometimes it is called as a pressure gradient. Okay, so one is the pressure gradient, although the vessels, which is the force that pushes the blood through the vessel, and second is the impediment to the blood flow, that means through vessels, which is the vascular resistance. If there is an impediment to the blood flow, means vascular resistance is there or not. So these are the two factors on which the blood flow is dependent. So figure 14.3 demonstrates these relationships, showing a blood vessels segment located anywhere in the circulatory system. P1 is represent the pressure at the origin of the vessels. At the other end, the pressure is P2 and resistance occurs as a result of friction between the flowing blood and the intravascular endothelium all along the insides of the vessel. The flow through the vessels can be calculated by following formula. So उसके लिए एक formula है, कौन सा है, Ohm's law. Ohm's law means what? Flow is directly proportional to the pressure difference and inversely proportional to the resistance. Means flow is equal to delta P by R. R is the resistance. Okay. So note that the difference in the pressure between the two ends of the vessel, not the absolute pressure in the vessel. It's okay, there is a difference, so that determines the rate of blood flow. अगर 100 mmHg है start में और end में भी 100 mmHg है, if there is a no pressure difference, then there will be no blood flow. Okay, Ohm's law. ओम्स लॉ का अदर वेरिएंट क्या आ जाएंगे, हम डेल्टा पी भी निकाल सकते हैं अगर हमको फ्लो पता है और रेजिस्टेंस पता है तो. ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी इज इक्वल टू फ्लो इनटू रेजिस्टेंस. ना देखते हैं हम ब्लड फ्लो क्या है. सो ब्लड फ्लो मीन्स सिंपली द क्वालिटी ऑफ अ ब्लड दैट पासेस अ गिवन पॉइंट इन द सर्कुलेशन in a given period of time. Okay,
This is the blood flow definition. Ordinarily, the blood flow is expressed in the milliliters per minute, और उसको हम लीटर्स पर मिनट के हिसाब से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मिलीलीटर्स पर सेकंड के हिसाब से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, द ओवरऑल ब्लड फ्लो इन द टोटल सर्कुलेशन ऑफ एन adult person at rest is about 5000 ml per minute. सो ओवरऑल ब्लड फ्लो कितना होता है एक मिनट के अंदर? 5000 ml. सो इसी को हम कार्डियक आउटपुट करते हैं. क्यों? क्योंकि आयोटा जो पंप करता है एक ईच मिनट में वो 5000 ml होता है. ठीक है. सो मेथड्स फॉर मेजरिंग ब्लड फ्लो. अब दो मेथड है जिससे हम ब्लड फ्लो मेजर करते हैं. सो पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर और दूसरा है अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर. सो नाउ आई डोंट थिंक देर विल बी आस्किंग मैकेनिज्म, बट गायटन बाबा ने बोला है तो हम उसको एटलीस्ट रीड कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है. सो फर्स्ट वी विल रीड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर. One of the most important device for measuring the blood flow without opening the vessel is electromagnetic flowmeter, the principle of which are illustrated in the figure 14.4. The figure 14.4a shows the generation of electromotive force, electrical voltage in a wire that is moved rapidly in the crosswise direction through a magnetic field. This is the well-known principle for production of electricity by the electric generator. Figure 14b shows that the same principle applies for the generation of electromotive force in the blood that is moving through a magnetic field. In this case, a blood vessel is placed between the poles of a strong magnet, and the electrodes are placed on the two sides of the vessels perpendicular to the magnetic lines of the force. When blood flows through the vessel, the lines of flow through the vessel, an electrical voltage proportional to the rate of blood flow is generated between the two electrodes, and this is recorded using an appropriate voltmeter or electronic recording apparatus. Figure 14.4c shows an actual probe that is placed on the large blood vessels to record its blood flow. The probe contains both the strong magnet and the electrodes. A special advantage of electromagnetic flowmeter is that it can record changes in the flow in less than 1/100th of the second, allowing an accurate recording of pulsatile changes in the flow as well as a steady flow. Ultrasonic Doppler flowmeter क्या होता है देखते हैं. Another type of flowmeter that can be applied to the outside of the vessels and that has many of the same advantage as the electromagnetic flowmeter is the ultrasonic Doppler flowmeter shown in the figure 14.5a. 14.5. A minute piezoelectrical crystal is mounted at one end in the wall of device, and this crystal, when energizes with the appropriate electronic apparatus, transmits ultrasounds at frequency of several 100,000 cycles per second downstreams along the flowing blood. A portion of a sound is reflected by the red blood cells in the flowing blood, and the reflected ultrasound these reflected waves have a lower frequency than the transmitted wave because the red cells are moving away from the transmitter crystal, and this is called as the Doppler effect. Okay, it is the same effect that one experiences when the train approaches and passes by while blowing its whistle. Once the whistle has passed by the person, the pitch of the sound from the whistle suddenly becomes much lower than when train is approaching. So for the flow meter in figure 14.5, the high frequency ultrasound wave is intermittently cut off and the reflected wave is received back onto the crystal and amplified greatly by electronic apparatus. Another portion of the electronic apparatus determines the frequency difference between the transmitted wave and the reflected wave.
thus determining the velocity of a blood flow. Like the electromagnetic flow meter, the ultrasonic flow meter is capable of recording rapid and pulsatile changes in the flow as well as a steady flow. Laminar flow of a blood in the vessel क्या है वो देखते हैं. Laminar flow, when the blood flows at a steady rate through a long small blood vessel, it flows in streamlines with each layer of the blood remaining the same distance from the vessel wall. Also, the central most portion of the blood stays in the center. Central most portion of the blood stays in the center of the vessel, and this type of flow is called as the laminar flow or the streamline flow, and it is opposite to the turbulent flow. Okay, which is blood flowing in all direction in the vessels and continually mixing within the vessels as discussed subsequently. अब मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया कि टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन में वो फ्लो होता है, और लैमिनार फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, और सेंट्रल ब्लड विल बी इन द सेंटर ऑफ द वेसल. ओके, नाउ हम देखते हैं पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल ड्यूरिंग लैमिनार फ्लो. ये डायग्राम में देखोगे आप तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेन किया है तो वो देख लेते हैं. व्हेन लैमिनार फ्लो अकर्स, द वेलोसिटी ऑफ अ फ्लो इन द सेंटर ऑफ द वेसल इज अ फार ग्रेटर देन दैट towards the outer edge of the vessel. Okay, outer edge से center की velocity ज़्यादा है, far greater. This is demonstrated in 14.6. In figure 14.6a, a vessel contains two fluids. उसके अंदर दो fluids है. One at a left it is colored by any dye, and one at a right is a clear fluid. So, but there is no blood flow in A. When the fluid are made to flow, the parabolic interface develops between them, as shown in the figure. Okay, second figure 16b 14.6b में. So portion of the fluid adjacent to the vessel wall has hardly moved. Okay, and the portion slightly away from the wall is moved a small distance, and the portion in the center has moved a long distance. So this is called a parabolic profile for the velocity of a blood flow. ये पूछ सकते हैं भाई क्वेश्चन, ठीक है. So the cause of the parabolic profile is the following. When the fluid molecules touching the wall barely moves because they are adherent to the vessel wall. The next layer of molecules slips over these, and the third layer sorry guys, the next layer of molecules slips over this, and the third layers over the second, and the fourth layer over third, and so forth. Therefore, the fluid in the middle of the vessel can move rapidly because many layers of a sleeping molecule exist between the middle of the vessel and the vessel wall. Thus, each layer towards the center flows progressively more rapidly than the outer layer. Turbulent flow of the blood under the some condition क्या होता है? Turbulent flow क्या होता है? When the rate of a blood becomes too great, when it passes by the obstruction in the vessel, when it makes a sharp turn, एक sharp turn ले लेता है, और when it passes over the rough surface, और या फिर फ्लो में then become a turbulent. एक रफ सरफेस से जाने से या फिर बहुत ग्रेट वेलोसिटी से जाने से और एक कहीं पर स्टक हो जाने से, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाने से ये टर्बुलेंट फ्लो होता है. Okay, streamline नहीं रहता. So turbulent flow means that the blood flows crosswise in the vessel as well as along the vessel. Along the vessel भी जाएगा, crosswise भी जाएगा, usually forming the holes in the blood called Eddy's current. Okay, the Eddy's current की वजह से. Eddy's current is what? It gives the greater resistance to blood flow. That's why there is a turbulence. Okay, so these are the similar to the whirlpools that one frequently see in the rapidly flowing river at a point of obstruction. Okay, so the tendency for the turbulence flow increases in the direction proportional to the velocity of a blood flow. Okay, ब्लड टर्बुलेंस को अगर टेंडेंसी जो है वो हम रेनॉल्ड्स नंबर से दिखाएंगे आई थिंक. सो वो उसका अगर देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? ब्लड फ्लो को. और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? डायमीटर ऑफ द ब्लड वेसल को. और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है? डेंसिटी ऑफ अ ब्लड को. और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसको है? प्रोपोर्शनल टू द inversely proportional to the viscosity of the blood. Okay, in accordance with the
फॉलोइंग इक्वेशन। सो रेनॉल्ड्स नंबर्स ज़्यादा होगा तो टर्बुलेंस ज़्यादा होगा, रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा तो टर्बुलेंस कम होगा, इतना याद रखना। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर को वैसे डिसाइड करते हैं आर ई से, कैपिटल आर और स्मॉल ई से, ठीक है। उसके अंदर वी डी सिग्मा एंड म्यू ऐसा कुछ, ठीक है। सो अब हम देखते हैं। सो रेनॉल्ड्स नंबर एंड इज द मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर द टर्बुलेंस ऑफ अ turbulence to occur, and v is the velocity of blood flow, okay, जो हम सेंटीमीटर पर सेकंड में काम करते हैं, and d is the small d is the velocity is the diameter, okay, and sigma is the density and nu is the viscosity। viscosity को काउंट करते पॉइज में, so viscosity of a blood कितनी है 1/30 पॉइज, and the density कितनी है only a slightly greater than 1, हम एक गिन सकते हैं। when Reynolds number rises about 200 to 400, इसका मतलब some branch of the vessels के अंदर ये turbulence होगा, ठीक है। और and smooth portions of the vessels में नहीं होगा, ठीक है। सम ब्रांचेस में होगा लेकिन स्मूथ पोर्शन के अंदर नहीं होगा। लेकिन अगर वो रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से ज़्यादा हो गया या फिर 2000 है तो वो टर्बुलेंस हर जगह होगा, इवन इन द स्मूथ मसल, ओके। Reynolds number for flow in the vascular system even normally rises to 200 to 400 in the large arteries. As the result, there is almost always some turbulence of a flow at a branches of these vessels. Okay, large arteries में ये सब MCQ है, ये सब important है guys, और अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको अच्छे से याद कर लेना और पढ़ लेना। इन द प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द आयोटा, द पल्मोनरी आर्टरी, the Reynolds numbers rises to the several thousand during the rapid phase of the ejection of biventricle. So Reynolds number सबसे हाईएस्ट कहाँ पर होगा, proximal portion of aorta and pulmonary artery, okay, ये MCQ आ सकता है। So this causes the considerable turbulence in the pulmonary aorta and pulmonary artery, where proximal aorta and pulmonary artery, where many conditions can appropriate for the turbulence. One is the high velocity of blood flow होता है, दूसरा pulsatile nature of होता है, sudden change in the vessel diameter हो जाता है इसके वजह से, और large vessel diameter होता है इसलिए। So however in the small vessel Reynolds number is the almost never high enough to cause the turbulence। small vessel में ज़्यादा नहीं होता, large vessel में ज़्यादा होता है। ये 4 फैक्टर्स है जहाँ पर Reynolds number तुमको ज़्यादा मिलेगा। अब understood guys? So now we will be stop here and we will see blood flow in blood pressure. We will see the blood pressure in next chapter. Okay guys, so let me give you the answer of question which I asked earlier. So what was the question? Question is the Hessel's gyrus, right? So in Hessel's gyrus is located where in the brain? Hessel's gyrus in brain is located in, what was the option? Options are, first one is the primary auditory cortex था, B medial frontal lobe था, C visual cortex था, और D parietal association areas थे, ठीक है। इसका आंसर है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ठीक है। अब प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्यों है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। हेशेल्स गायरस को हेस्लेस कन्वोल्यूशंस भी बोला जाता है। अब गाइज एक याद रखना कि जब भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका तो उसके अंदर बहुत सारे इंफॉर्मेशन आएंगे, ठीक है। सो वो इंफॉर्मेशन से भी बहुत सारे MCQ बन सकते हैं। सो ये एक MCQ के एक्सप्लेनेशन में तुमको 10 से 15 MCQ बन जाएंगे। सो एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। MCQs के लिए आप चाहिए तो आप नई आपकी कॉपी बना सकते हो या फिर इसी को बार बार पढ़ सकते हो या फिर सुन सकते हो, ठीक है। सो हेस्लेस गायरस को और एक नाम दिया गया है ट्रांसवर्स टेम्पोरल गायरस, ठीक है। कितने होते हैं ये बॉडी में? 2 होते हैं। हाउ मेनी हेस्लेस गायरस आर देयर? 2 इन नंबर, ओके। क्लासिकल लैंडमार्क्स फॉर द प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स का क्लासिकल लैंडमार्क्स है। फिर भी हम देखेंगे ये करस्पॉन्ड्स करता है ब्रॉडमैन्स एरिया 41 और ब्रॉडमैन्स एरिया 42। ब्रॉडमैन्स एरिया 41 में प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के 2 क्लासिकल लैंडमार्क्स है, एक ब्रॉडमैन्स एरिया 41 और ब्रॉडमैन्स एरिया 42। 41 के अंदर तुमको पाया जाएगा प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स और 42 के अंदर पाया जाएगा
associative auditory complex. You will find a primary auditory complex in 41 and associative, that means secondary auditory complex in area 42. ब्रॉडबैंड एरिया 41 and 42 पता चल गया आपको क्या होता है. ओके, नाउ these located on the anterior part of the superior, ये superior temporal gyrus के anterior part में होता है. Hessel's gyrus are the located on the anterior part of superior temporal gyrus which forms the floor of lateral sulcus. Okay, it also receives the efferent fibers from medial geniculate body. Medial geniculate body से इसे efferent fibers मिलते हैं. Okay, it is on the posterior part of the temporal gyrus is called planum temporal. Posterior part of temporal gyrus को हम और एक नाम दिया गया है planum temporal. Posterior part of superior temporal gyrus is also called as planum temporal. याद रखना, ये भी MCQ आ सकता है. अब गाइज आपको मैं बताता हूँ कि एक कॉर्टिकल फंक्शंस के जो एरिया, फंक्शनल एरिया होते हैं, कॉर्टिकल फंक्शनल एरिया, और उसका करस्पॉन्डिंग ब्रॉडमैन्स एरिया कौन सा आता है, मीन्स कौन से ब्रॉडमैन्स एरिया में कौन सा कॉर्टिकल पॉइंट है, या फिर कौन से कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया लाया करता है. ठीक है, सो वेरी फर्स्टली प्राइमरी कॉर्टेक्स, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया आ जाएगा, 4. सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स को रिलेटेड ब्रॉडमैन्स एरिया कौन सा है, ब्रॉडमैन्स एरिया 1, ब्रॉडमैन्स एरिया 2, ब्रॉडमैन्स एरिया 3. ओके, प्री मोटर कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया आ जाएगा, ब्रॉडमैन्स एरिया 6. विजुअल कॉर्टेक्स के लिए कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया आ जाएगा, ब्रॉडमैन्स एरिया 17. वर्निक्स एरिया, वर्निक्स एरिया होता है ब्रेन में, उसके लिए कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया आ जाएगा, इसके लिए ब्रॉडमैन्स एरिया 21, ब्रॉडमैन्स एरिया 22, ब्रॉडमैन्स एरिया 42. वर्निक्स एरिया के बारे में और एक बात बताता हूँ, वर्निक्स एरिया अल्कोहलिक्स के अंदर डैमेज होता है, इसलिए वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी होती है उसमें, याद रखना. ऑडिटरी कॉर्टेक्स के लिए कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया हो जाएगा, 41. टेस्ट कॉर्टेक्स, टेस्ट, ओके, टेस्ट कॉर्टेक्स के लिए कौन सा ब्रॉडमैन्स एरिया हो जाएगा, 43. ब्रोकाज एरिया, ओके, ब्रोकाज एरिया, यू नो व्हाट इज ब्रोकाज एरिया. ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, फाइंड आउट व्हाट इज ब्रोकाज एरिया. एंड ब्रोकाज एरियाज के लिए ब्रॉडमैन्स एरिया कौन सा होगा, 44 and 45. So guys, what is our answer? Answer is the primary cortex, प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स. ओके, सो इसका अगर आपको रेफरेंस चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि क्रॉस चेक किया जाए तो कर सकते हैं आप. तो बार्स न्यूरो एनाटॉमी एक रेफरेंस है, इसका 9th एडिशन देखना और चैप्टर 15 में देखना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. ओके गाइज, सो फॉर टुडे दिस इज इनफ. वी विल बी मीट इन नेक्स्ट पार्ट, and in that next part also I'll be taking one another question. Okay, and same likewise I'll give you explanation, and in that explanation you will find around 15 to 20 questions. For 20 MCQs can be made from that explanation also. So in each video you will be doing 20 MCQs. Okay, so guys, do it carefully and means consciously do this and put some efforts and listen carefully. Okay, ईमानदारी से करो. Okay, okay guys, so this is Dr. Anil signing off. Keep supporting, do share because sharing is caring. Do share knowledge share करने से बढ़ता है guys. Yes, thank you, good day, take care.